Assalamu alaikum, my dear class 4. How are you all? I hope all of you are very fine and staying very good at your homes. And I hope you all are enjoying your holidays. So, class 4, it's your English lecture, and in this lecture, I'm going to guide you something about your winter vacation work. Yes, the winter vacation work I gave you in the class, I'm going to tell you something about it. I will guide you that how you have to do it and what's in it. You already know that it's really easy, but I will uh, guide you a little bit in it so you can do more better. So let's start. Okay, so have your pages, the winter vacation pages in your hands, and I'm going to read it for you. So let's begin. Okay, the first question is, okay, first of all, you have to do all of these questions in the loose sheets. Okay, English के sheets पे आपने ये करना है. First of all, you will write the winter vacation work, write the date and date. Then you will write at the start, at the bottom of the page, that winter vacation work, and then you will start writing your questions. And also you have to write your names, full names, and class on them, class and section. Okay, so the first question is make sentences. Okay, the first question is fly. First sentence is fly. Fly means urna. Second word is chocolate. Chocolate means it's a sweet thing, right? जो आप सब बहुत शौक से खाते हैं, अपने सेंटेंस बनाने. Next word is butterfly. You all know we have हमने इस वर्ड के बारे में पूरा चैप्टर पढ़ा था. हमने सारा साइकिल पढ़ा था कि बटरफ्लाई कैसे बनती है. फर्स्ट इज अ कैटरपिलर, देन व्हाट इट्स बिकेम, उसका सारा प्रोसीजर क्या था. तो हमने बटरफ्लाई का एक सेंटेंस बनाना है. देन द फोर्थ वर्ड इज सरप्राइज. सरप्राइज मीन्स हैरान होना. देन द नेक्स्ट वर्ड इज क्विकली. क्विकली मीन्स जल्दी से. Okay, now second question is translate the following sentences into English. आपने नीचे वाले sentences को English में translate करना है. So these are all those sentences which we have done in the class. These all of the sentences are from your indefinite tenses: present, past, and future. Right? So the first sentence is Ali school जाता है. Ali school जाता है. Which tense is this? स्कूल जाता है, ऑलरेडी भी जाता है. सो इट्स अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. यस, इट्स नॉट अ पास्ट. प्रेजेंट है कि वो जाता है. अगर वो कहते वो जाता था तो इट विल बी पास्ट. अगर वो कहते जाएगा तो दैट विल बी फ्यूचर, राइट. सो दिस इज़ अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो अब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला फटाफट अपने जहन में लेकर आना है. आप कॉपीज भी कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है. फिर आप इसका इंग्लिश लिखेंगे. सो व्हाट do we do in the present indefinite tense? We add s or es, right? First of all, we add subject, then we write the form of verb. First form of verb इसमें रख लगाते हैं और इसके साथ ऐसे yes लगता है. फर्स्ट फॉर्म लगती है और ऐसे yes लगता है और फिर ऑब्जेक्ट लगता है. लाइक अली स्कूल जाता है तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा है, राइट. तो हेयर हु इज़ वर्किंग? अली. सबसे पहले हम लिखेंगे अली, फिर क्या है? अली स्कूल जाता है. ठीक है, अब हमने देखना फार्मूला में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अब फर्स्ट फॉर्म देखने हमने वर्ब की, तो वर्ब क्या होता है? काम. तो इधर काम क्या हो रहा है? जाता. ठीक है, जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो, राइट. सो वी विल राइट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गो विच इज़ गो. और क्या लगाएंगे साथ? फार्मूला में है सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एस और एस. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने लगा दी गो, देन वी विल ऐड एस और एस. We will add es with go. We will write Ali goes to. Then we will add the object. Object means जहाँ या जिस जगह पे या जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा होता है, right? So in this sentence कि कहाँ यहाँ पे किधर काम हो रहा है? अली कहाँ जाता है या किधर काम कर रहा है? Yes, school. So we will write Ali goes to school, right? So you all have to do all of these sentences like this. You have to keep in mind the formula of the tenses and then you have to solve it. ठीक है, सबसे पहले you will see that which tense is this. पहले आप देखेंगे कौन से टेंस का सेंटेंस है ये उर्दू का. फिर आप उस टेंस की फार्मूला को अपने जहन में लाएंगे. then you will start writing and then you will start writing or making the sentence. Second is आयशा बाग में गई. So it's a गई, मतलब गई. हमें नहीं पता कब गई, पहले गई थी. So it's a past tense, right? So now you will keep it in mind
formula of past. Yes, and we are past का भी formula वही है, but just we don't add es and we add the second form of verb with the past indefinite, right? So इसे हम second form लगाएंगे, then हम कल सैर को जाएंगे. Which tense is this? जाएंगे. Yes, it's a future indefinite tense. Next is बिल्ली ने चूहे को पकड़ा. बिल्ली ने चूहे को पकड़ा. अब उन्होंने ये नहीं बताया कब पकड़ा है, उन्होंने कहा पकड़ा. यस, पकड़ा, यानी पकड़ा होगा, कभी भी पकड़ा होगा. उन्होंने ये नहीं कहा कि पकड़ रही है, जब उन्होंने ये नहीं कहा पकड़ती है या पकड़ेगी. उन्होंने कहा है पकड़ा. ठीक है, पकड़ा, पहले पकड़ा. सो इट्स अ पास्ट टेंस, राइट. नेक्स्ट इज मैं स्कूल का काम वक्त पर करती हूँ. करती हूँ यानी अभी भी करती हूँ. सो राइट, इट्स अ present indefinite tense. So you have to keep in mind the formulas of the formulas of these tenses and then you have to solve these sentences. आप फॉर्मूला के लिए आप कॉपी से भी कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको कंफर्म नहीं है. बट जो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू ऑल हैव टू कीप इन माइंड, यू ऑल हैव टू लर्न द टेंसेस वेरी वेल, ताकि आप इंग्लिश के सेंटेंसेस बहुत अच्छे तरीके से बना सकें. देन योर थर्ड क्वेश्चन इज़ राइट अ पैराग्राफ ऑन माई फेवरेट गेम. आपने एक पैराग्राफ लिखना है अपनी पसंदीदा खेल के बारे में, जो आपका पसंदीदा खेल है. इट कैन बी अ स्पोर्ट और इट कैन बी एन इंडोर गेम और एन आउटडोर गेम और इट कैन बी एन एनी गेम. लाइक आप आउटडोर की कोई स्पोर्ट भी लिख सकते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, एनीथिंग. और इंडोर की भी आप कोई भी गेम खेल लिख सकते हैं, लाइक लूडो, लाइक एनीथिंग दैट यू प्ले विद योर फ्रेंड्स और विद योर कजन्स. जो भी आप घर में कोई गेम खेलते हैं, लाइक देयर आर मेनी बोर्ड गेम्स, कैरम, स्क्रैबल, and there are so many other games that you play at homes, and there are some paper games कि आप जो पेपर पे खेलते हैं. So which one is your favorite? You have to write a paragraph about it. You have to write that why do you like it and with whom do you play with it. So it's really interesting and it's easy, and I hope you all will do it very well and with so much of interest. So that's about it. Now we will meet in the school and I will check how you have attempted this winter vacation work. So I'll say good luck to you. Till then, take care, my class. Allah Hafiz.